Good afternoon, everyone. How are you all? And how is everything? I hope all of you are practicing well and studying well. Exams are near, so definitely you must be working hard in terms of preparing for your exams, right? So that is important. You have to focus there because you have to score very well, right? But with that, because as you are attending all these classes and you've been attending all these classes, so you are trying to understand and then you are trying to see how to how to get into the habit of speaking, how to make sure that you understand different structures, and with the help of different structures, you get comfortable in terms of talking about different situations. So this is somewhat difficult in terms of getting into the habit. So this happens gradually, it happens slowly. So don't think that it will happen very fast. It takes some time. So you have to give yourself some time also. But with that time, you have to make sure that you are practicing continuously, right, on daily basis. Now, what do we mean by continuously? It simply means that you are trying to take out 15 minutes, 20 minutes, at least 15 minutes. If you are able to take out more than 15 minutes, then it's wonderful. But as I understand that exams are nearby, so you are also preparing for your exams. So sometimes it becomes difficult to take out some free time. But you don't have to take out a lot of time. You just have to see whether you are able to take out 15 minutes from your difficult or schedule, right? And simply practice something, right, in those 15 minutes. Okay, so that is important. So just in those 15 minutes, you can also review all the structures, or you can simply read the examples, or simply you can watch some of the videos for some time, and you can also do some of the exercises. So let's say not all the exercises, not all the examples from those exercises, just try to do some 4 or 5 examples from each exercise. So if you are able to do that, it means you are in practice. You are doing something. So that's why something is better than nothing. If you don't do anything, then definitely there will be a gap, and when a gap comes, it is not good, right? So you don't have to let that gap come in between. Yeah. So this is something you have to do by yourself, right? And more you do it, more you understand, better you get into the habit of speaking. So in the last class also, we took some examples, and we've been taking different examples because examples are important. That's why I share a lot of examples. I share different examples related to different situations because this is something where where you understand very well that what to say, what not to say, how to form sentences, how to use a structure as per the situations. So जितनी भी ऐसी situations हैं important हैं उनके लिए structures, and important part ये है कि जब आप situations के according structures use कर रहे हैं तो वो आपको structures एकदम से hit कर रहे हैं, एकदम से strike हो रहे हैं कि हाँ, this situation में ये structure use करना है, I have to ask this question like this. So this is all about doing continuous. एंड जितना ज्यादा ऐसे करेंगे उतना ज्यादा धीरे 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 वो फिर नेचुरल होता जाएगा। फिर जब नेचुरल हो जाएगा तो फिर आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या यूज करना है, एंड फिर ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, राइट? जैसे अभी कहीं कहीं आप लोग रियलाइज करते होंगे कि कभी कभी ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी सेंटेंस सुन के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, एंड अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कुछ बोलना है तो उसको पहले हिंदी में सोचना फिर ट्रांसलेट करना, ये भी एक नॉर्मल सी सिचुएशन है जो स्टार्टिंग में होती है, राइट? लेकिन स्टार्टिंग में होने का सेंस ये नहीं है कि ये कंटिन्यूअसली होना चाहिए, राइट? बिकॉज इट्स नॉट अ गुड हैबिट टू थिंक इन हिंदी एंड देन डू द ट्रांसलेशन। सो ये भी हमको कोशिश करनी है कि आपको ट्रांसलेशन कम से कम करना है, उसकी कम से कम हेल्प लेनी ट्रांसलेशन, राइट? एंड यू हैव टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ थिंकिंग, सोचने की हैबिट डायरेक्टली इन इंग्लिश। अब
सोचने की हैबिट ये तो बोली जाती है कि डायरेक्टली आप इंग्लिश में सोचिए। सो जो भी आप सेंटेंस नॉर्मली आप जैसे हिंदी में सोचते हैं, राइट, इन द सेम वे यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश। एंड ये भी धीरे धीरे इसकी हैबिट डलेगी। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आज हमने बोला कि इंग्लिश में सोचना है और अभी से हमने इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर। लेकिन उसके लिए जब आप धीरे धीरे अपने आप को फोर्स करेंगे दैट आई हैव टू थिंक इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी। हिंदी में सोचेंगे तो ट्रांसलेशन होगा, एंड इंग्लिश में सोचेंगे तो डायरेक्टली वहां पे सेंटेंसेस आएंगे, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा आप इस हैबिट में जाएंगे, सोचने की हैबिट में, राइट, इंग्लिश यूज करने की, डायरेक्टली यूज करने की हैबिट में, ये ऐसी ही सिचुएशन है जैसे आप नॉर्मली हिंदी यूज करते हैं, राइट। सो आपको उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल होना है जैसे यू यूज एनी अदर लैंग्वेज। जो भी नेटिव लैंग्वेज है हमारी, जो भी हम यूज करते हैं, राइट, ऑल द टाइम, उसी तरह से हमको इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज करना है। अब धीरे धीरे इसमें जितनी सारी चीजें हैं, राइट, जैसे आपको धीरे धीरे बताते रहता हूँ मैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, इस पे भी ध्यान देना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सारे पार्ट्स मिलके ही कोई लैंग्वेज बनती है, राइट। सो वोकेबलरी भी इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स भी इम्पोर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन भी इम्पोर्टेंट है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, राइट। सोचना भी इम्पोर्टेंट है। एंड सोचने के साथ जैसे uh, हमने जब पिक्चर करी थी, पिक्चर्स, राइट, तो वहां पे देखा था हमने कैसे हम स्टोरी बनाते हैं। स्टोरी इसलिए बन रही है वहां पे क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस यूज करना है। क्योंकि अभी हमारा जो एम है वो यही है कि कितने ज्यादा हम सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, राइट। एंड जैसी सिचुएशन होंगी वैसे आपको सेंटेंसेस यूज करना है। वहां पे आपको ये देखना है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं, आराम से सेंटेंसेस आ रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं आप, उसमें कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, कंफ्यूजन हो रहा है तो उस पर भी ध्यान देना है। एंड देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर करेक्टिंग योर मिस्टेक्स, राइट। बोलते बोलते खुद ही अपनी मिस्टेक्स समझ में आ जाती हैं। जहां पे समझ में आ रहा है कि नो, आई हैव डन एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक, वहां पे स्टॉप होइए, मिस्टेक को करेक्ट करिए, and then say that thing again, and then again move forward. So this is something you have to keep on doing. So all these things are important, and you have to take care of all these things, okay? Because अभी आप अपना जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पे, राइट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी आपने रियलाइज किया होगा कि जितने भी अभी हमने स्ट्रक्चर्स करे हैं इसकी हेल्प से आपने डेफिनेटली काफी डिफरेंस देखा होगा अपने लेवल में, एंड काफी आपने ये देखा होगा कि कंफर्ट आया है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है। एंड अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद डिफरेंट सिचुएशंस भी क्लियर हुई है, कहाँ पे कैसे सेंटेंसेस को यूज करना है, स्ट्रक्चर्स को यूज करना है, वो भी क्लियर होगा। अब ये जो क्लैरिटी की बात है कितनी ज्यादा क्लियर हुई है, कितना ज्यादा कंफ्यूजन है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने तरफ से कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं। ओके, यहाँ पे तो क्लास में हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, वो तो आपको हेल्प कर रही है। लेकिन जब आप खुद से ट्राई करेंगे तब आपको और पता चलेगा कि कहाँ पे कंफ्यूजन है, कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है, कहाँ पे पॉइंट्स क्लियर नहीं है। वो सब आपको जब पता चलेंगे जब आप यूज करके देखें। तो इसलिए ये पॉइंट आता है कि प्रैक्टिस, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होती रहेंगी, उतना ज्यादा पॉइंट्स क्लियर होते रहेंगे, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। सो इन सारी चीजों पे आपको काम करते रहना है। ओके, जब जैसे आपको टाइम मिले वैसे आप उसको यूज करते रहें। ओके, बिकॉज लैंग्वेज लर्निंग में गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। हम ऐसे नहीं समझें कि हमने खूब सारी वोकेबलरी याद कर ली तो इजी हो जाएगा, या हमने सारे स्ट्रक्चर्स एक दिन में बैठ के याद कर लिए इजी हो जाएगा। नो, देयर इज अ प्रोसेस। लैंग्वेज लर्निंग का एक प्रोसेस होता है, एंड उसको हमको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, किसी भी चीज में एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी, राइट। डोंट थिंक दैट टुडे यू आर स्टडिंग समथिंग एंड टुमारो और मे बी आफ्टर 3 days or after a week you will be super comfortable in that, right। super comfortable आप होंगे, वो आपके डिपेंड करेगा आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, राइट। सो have patience रखना important है, right। And from your side you have to keep on practicing, keep on putting efforts, keep on doing something in terms of using the language, in terms of thinking, in terms of making sentences, in terms of making sure that you are meeting
meeting people and then you are trying to say something, you are trying to ask something to them, right? क्योंकि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करती रहनी, ओके, एंड वो चेक कैसे होगी? वो ऐसे ही चेक होगी जब आप उन सिचुएशंस में अपने आप को रखेंगे एंड उन सिचुएशंस में आप यूज करेंगे सेंटेंसेस, क्वेश्चंस पूछेंगे किसी से, राइट? सो वो इन्वायरमेंट मिलना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे भी लर्निंग होती है, ओके। ऐसे जब सिचुएशंस नहीं है तो फिर हमको अकेले ही ऑफ कोर्स प्रैक्टिस तो करनी है, प्रैक्टिस के लिए वो ठीक है, लेकिन आपको रियल सिचुएशन में भी कोशिश करनी है कि यू आर डूइंग स्मॉल कॉन्वर्सेशंस, राइट? वो वहां पे आप अपने आप को चेक करेंगे, अंडरस्टैंड कि कितने कंफर्टेबल है जब आप किसी से मिले, लेट्स से, एंड यू वांट टू से समथिंग और यू वांट टू आस्क समथिंग, वो कितना इजीली कंफर्टेबली क्वेश्चन इज कमिंग और यू आर गिविंग आंसर टू दैट क्वेश्चन. So for that, you have to get into such kind of conversations where you get real experience. So real experience भी हमको काफी help करता है in terms of understanding things. कि हम ने कुछ चीजें सीखी हैं, हम उनको यूज कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन है, हेजिटेशन है, या बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, ऐसा भी होता है कि जब आप अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू नो एवरीथिंग, you make a lot of sentences, right? You make different sorts of sentences and you make all the correct sentences. But for example, when you start talking to someone or someone asks you any question, there you get confused. There you don't get anything. There you fumble. There you give wrong answer. There you give wrong structure. And then later on you realize, oh, I made wrong sentence there. I used wrong sentence there. I used incorrect structure there. Right? So this is also a part of learning. ऐसा भी हो रहा है तो ये भी एक पार्ट है लर्न, राइट? बिकॉज जब आप किसी से बात करते हैं, राइट, किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपसे कोई पूछ रहा है, आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, सो दैट इज रियल सिचुएशन है, राइट? रियल सिचुएशन में कुछ हेजिटेशन की वजह से, कुछ कंफ्यूजन की वजह से ऐसी मिस्टेक्स हो जाती. सो डोंट थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू डू दैट, बिकॉज इट इज नॉर्मल. एंड धीरे धीरे आप वो कंटिन्यू रखेंगे, ऐसे रियल कॉन्वर्सेशंस में धीरे धीरे पार्टिसिपेट करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि दैट यू आर डूइंग दोज रियल कॉन्वर्सेशंस. मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ, या अपने टीचर्स के साथ, या आपके ऐसे दूसरे फ्रेंड्स हैं, राइट, उनके साथ आप ऐसे रियल कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं. छोटे छोटे करिए रियल कॉन्वर्सेशंस, ऐसे नहीं कि अभी बहुत लेंथी सा एक्सप्लेनेशन हम देने की कोशिश करें, राइट? बिकॉज यू हैव टू गेट इन टू द हैबिट ऑफ डूइंग दैट. जितना ज्यादा आप उस हैबिट में जाएंगे उतना ज्यादा यू विल फील कंफर्टेबल एंड यू विल अंडरस्टैंड दोज स्ट्रक्चर्स एज पर द सिचुएशन. ओके, चलिए. ऑल राइट, अभी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस ही कंटिन्यू करेंगे. लास्ट क्लास में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस स्टार्ट किया था एंड वहाँ पे कुछ हमने एग्जांपल्स लिए थे फ्यूचर कंटिन्यूअस के. सो एज यू अंडरस्टैंड के स्ट्रक्चर्स आर सुपर इजी, right? Future continuous, it means something is happening in the future continuously, and for that आप वहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. टाइम एक्सप्रेशन बिना यूज किए भी जब भी हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो वो स्ट्रक्चर हमको क्लियर हिंट दे देता है दैट व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट. Okay, what why are you making this sentence? Why are you using this sentence? What is your intention behind using that sentence? Because it all depends on the situation. And as per the situation, we have different structures and we use them as per the situation. So जैसे situation है वैसे हम structures use कर रहे हैं just to talk about something that happens on daily basis, something that happened earlier, or something will happen in the future, or maybe something is going on continuously or was going on continuously at fixed time, or maybe something will be going on, right? So it all depends on the situation. So just you have to make sure that you understand all these structures as per the situations. कि किन सिचुएशन में हमको क्या यूज करना है, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस थोड़ी सी एज पर द सिचुएशंस के कैसे हमको यूज करना है उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस, एंड देयर एवरीथिंग बिकम्स इजियर, राइट? डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगता है बट एवरीथिंग बिकम्स इजियर. ओके, चलिए. सो टुडे
it's 35th day, right, of level 2. And again, analyze, as I say always, कि 34 डेज की जो जर्नी है उसको एनालाइज करिए, राइट, एंड सी दैट कितने कंफर्टेबल हो गए। जैसे ये डे बाय डे पढ़ रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आप धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रहे हैं। जितना हम डे फर्स्ट पे थे, सो डे फर्स्ट से हमको जज करना है अपने आप को कि डे फर्स्ट से हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या थी। फिर देन डे 10 पे ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रेक कर करके भी कर सकते हैं। डे 10 पे कितना कंफर्टेबल हुए, अंडरस्टैंडिंग हुई, और आज तो 35th डे है, सो 34 डेज की जो हमारी जर्नी है उसमें हम कितने स्ट्रक्चर से, कितने सिचुएशन से कंफर्टेबल हो गए, राइट, एंड हाउ वेल यू आर एबल टू यूज सिचुएशंस, यूज स्ट्रक्चर्स, राइट, कितने अच्छे से हम उसको यूज कर पा रहे हैं। ओके, now, as you know that future continuous, this is something used as related to the time, and it talks about the future. Future की बात हो रही है, future में हम simple sentence भी use करते हैं, और यहाँ पे continuous है, मतलब उस टाइम पे वो चीज प्रोग्रेस में होगी, फ्यूचर में प्रोग्रेस में होगी। सो अब देखिए यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स हैं, शी विल बी स्टडिंग, मम्मी विल बी कुकिंग डिनर, सो दीज आर पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे, राइट। हमने नेगेटिव सेंटेंसेस भी देखे थे लास्ट क्लास में, कि नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या सेंस आ रहा है, कंटिन्यूअसली, ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, एंड यहाँ पे विल नॉट यूज हो रहा है, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम वोंट यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, ही वोंट बी स्लीपिंग। जैसे हमने देखा था कि क्लास में, लास्ट क्लास में, कि कुछ सेंस ऐसा भी निकलता है कि जिसमें हम बोले हैं कि प्रेजेंट में बात हो रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज राहुल, राइट। सो यहाँ पे सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसे आंसर दे दे दैट ही विल बी स्लीपिंग। वेयर इज राहुल, ही विल बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा, राइट। सो इन दिस वे ऑल्सो फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज होते हैं इस तरह की सिचुएशंस में जहाँ पे प्रेजेंट में बात हो रही है, और आप उसको क्या सेंटेंस का आंसर दे रहे हैं, तो कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे पास्ट की बात हो रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज फादर, राइट। अब नाउ यू डोंट नो कि वेयर इज फादर, तो वहां पे आप थोड़ा सा गैस कर कि वो ऐसा कर रहे होंगे, because you don't have the exact idea. So for such situations also we use future continuous, right? For example, I think father will be reading newspaper, father newspaper पढ़ रहे हैं। तो लेट्स से ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे आप अपने ब्रदर के साथ ड्राइंग रूम में बैठे हैं, फादर जो है आपके बेडरूम में बैठे हैं, एंड आपके ब्रदर आपसे पूछ रहे हैं वेयर इज फादर, राइट। एंड आपको थोड़ा सा ऐसा गैस हो रहा है कि शायद फादर बेडरूम में न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ओके, सो हाउ विल यू से father will be reading newspaper in the bedroom? I think father will be reading newspaper in the bedroom. Okay, so in this way also we use future continuous. So future continuous दो तरह से यूज हो रहा है। एक तो एग्जैक्टली फ्यूचर की बात हो रही है, राइट, विद द हेल्प ऑफ टाइम एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, एट 1 p.m. tomorrow I will be talking to my friend। अब मुझे ऐसा पता है कि कल 1 बजे मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। सो फॉर दैट, अभी मैं ये सेंटेंस यूज कर रहा हूँ दैट आई विल बी टॉकिंग टू माय फ्रेंड टुमारो एट 1 p.m। सो इन दैट वे ऑल्सो आपको ये पता है कि इस टाइम पे कल आप क्लास में पढ़ रहे हैं। सो यू विल से द सेम थिंग दैट आई थिंक आई विल बी स्टडिंग इन द क्लास एट दिस टाइम टुमारो, राइट। कल इस वक्त क्लास में पढ़ रहा हूँ। इसी तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस के भी सेंटेंसेस बनाते हैं जहाँ पे फिक्स टाइम की बात होती है कि इस वक्त ऐसा कर रहा था, right? So that is all about past continuous. So we have different situations, and as per the situations you will use these sentences. Okay, for example, she was studying at this time yesterday। इस पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, she was studying at this time yesterday। okay, so इस वक्त वो पढ़ रही, right, because the action was going on। so एक्शन वॉज गोइंग ऑन, पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग, जहाँ पे जैसा सेंस निकलना है आप सोच रहे हैं, उस सेंस के अकॉर्डिंग you will make sentences and you will use future continuous, right? ओके, सो यहाँ पे ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे हमने 4 जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, जैसे इंडेफिनेट है,
पास्ट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, एंड कंटिन्यूअस में थ्री सेक्शंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे इन एग्जांपल्स में से हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्या डिफरेंसेस रहते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, right? So for example, with plural subject, you use first form, right? You do not add anything as yes, is when you make sentences of present indefinite, of habits, of routine, right? So I study, he studies. Okay, but with singular subject, you add something as es, is that we discussed in the class. Okay, I studied. This is past indefinite, something you talk about that happened earlier. Okay, earlier, पहले के, where you we use verb second form, and यहाँ पे सारे ही subject के साथ we use verb second form. So I studied, he studied. If something is going on, action is going on, right? I am studying. And when you make with singular subject, we use is, and with plural subject, you, we, they, we use are. So he is studying, they are studying, something is going on. I was studying for past continuous. In the same way, he was studying. And when we use plural subject, we use were when we make past continuous sentences. And then we have future related sentences where with all the subjects, सारे subject के साथ, we use a future continuous part, will be, and ing forms. Okay. One more example. When we say plural subject, you play cricket, you played cricket, you are playing cricket, you were playing cricket, you will be playing cricket. But when we use singular subject, then again कुछ changes हैं, कहीं पे कुछ changes हो रहा है, कहीं पे कोई भी changes नहीं है. So you have to take care of all these things. जहाँ पे जो changes आने हैं, right? That is grammar. वो grammar, right? And that is also very important that you use correct grammar. That's why we have different structures as per the situations, because in those situations we use different parts of grammar, right? Just to make it clear that what is the sense coming from that sentence, what is the situation going on. And as per the situation, you make different sentences. All right. Okay. चलिए अब नेक्स्ट पार्ट ये देखते हैं हम कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राइट? एग्जाम्पल ये है एट 1 o'clock टुमारो, राइट? कल की बात हो रही है, एट 1 o'clock टुमारो, एंड देन वी हैव सम सेंटेंसेस. ओके, so again understand the situation, that the situation is at 1 o'clock tomorrow, so it means future. Someone wants to talk about future की बात करना चाह रहे हैं, right? And at 1 o'clock tomorrow, राइट? यहाँ पे कंटिन्यूअस सेंटेंस हम यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस. सो फॉर एग्जांपल, यू आर टेलिंग योर फ्रेंड दैट at 1 o'clock tomorrow, what will you say? I will be studying in school. So at 1 o'clock tomorrow, I will be studying in school. कल 1 बजे मैं पढ़ रहा हूँ स्कूल. So this is the sense coming. I will be studying in school tomorrow at 1 o'clock. At 1 o'clock tomorrow, I will be studying in school. Okay. For example, अगर यहाँ पे हम future sentence use करते हैं, let's say if you say I will study, right? I will study at 1 o'clock tomorrow. So यहाँ पे continuous वाला जो part है कि ऐसा हो रहा होगा, that will not come, because simply you are giving the idea कि ऐसा future में मैं करूँगा. So at 1 o'clock tomorrow I will study, right? ऐसा हो रहा होगा. No, you are not using that sense, right? So understand the difference between the continuous and the simple future. Okay. Now we have some more examples. एंड जल्दी से पहले आप ट्राई करेंगे एग्जाम्पल्स को. सारी एग्जाम्पल्स में हम क्या सिचुएशन ले रहे हैं? एट 1 o'clock टुमारो. सो जितने भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, उन एग्जाम्पल्स में हिंट हमारे लिए ये है कि हम एट 1 o'clock टुमारो की बात कर रहे हैं, एंड देन वी हैव डिफरेंट सेंटेंसेस. ओके, सो उसी की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग यू विल कंप्लीट द सेंटेंसेस. सो एट 1 o'clock टुमारो, right? You are telling your friend at 1 o'clock tomorrow, what? You will be waiting for the bus, right? You will be waiting for the bus. Okay, so यहाँ पे कुछ हम examples ले रहे हैं just to understand the situation very well, that what are these examples.
is related to future continuous. Okay, so something we use for future, and we talk about the time also. Okay, all right. Next one, at 1 o'clock tomorrow, right? What will she be doing? Okay, you will say, all right, she will be. So structures are super simple. Structures तो super simple हैं because सारे ही subject के साथ you have to use will be and you have to use verb and you have to add ing. So you have to add ing in verb first form. That's what you have to do. Okay, so here with all the examples, you have to use future continuous sentences. Okay, and let's say all the examples are related to at 1 o'clock tomorrow. Okay, at 1 o'clock tomorrow. So you have some sort of understanding that at 1 o'clock tomorrow, ऐसा हो रहा होगा. क्या हो रहा होगा? It will be raining. सो अब देखिए यहाँ पे ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, सिंपल फ्यूचर है, अगेन स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या समझ के, क्या सोच के सेंटेंस को यूज करना चाह रहा है. ओके, सो हम सेंटेंस ऐसे भी बोल सकते हैं, इट विल रेन टुमारो एट 1 p.m. ओके, इट विल रेन टुमारो एट 1 p.m. अगर हमको एग्जैक्टली वेदर फोरकास्ट का आइडिया है और हमको ऐसे पता चला है कि 1 o'clock टुमारो बारिश होगी, सो हम ऐसा सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं that as per the weather forecast, it will rain tomorrow at 1 p.m. That is also correct sentence. Okay. So it all depends कि आपको कहाँ पे किस तरह का sense देना है. And for that sense, you have different sentences. Sentence जो भी structure हम use करेंगे situation के according, वो उस situation में meaningful होना चाहिए. Right? उसका sense proper निकलना चाहिए. चलिए, this is again related to at 1 o'clock tomorrow. सो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स हैं, आप इन एग्जाम्पल से ये समझ रहे हैं कि किस तरह के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, यूज हो सकते हैं. बिकॉज मोस्टली फ्यूचर कंटिन्यूअस बहुत कम ही से यूज होता है, राइट? सिंपल फ्यूचर को भी हम यूज करके अपनी बात को रख सकते हैं, राइट? सो हियर विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, जस्ट गिविंग यू द आइडिया दैट कैसे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं, राइट? सो someone is saying that at 1 o'clock tomorrow we will be getting ready to go out. 1 p.m. कल 1 p.m. इस वक्त कल 1 p.m. पे या कल 1 p.m. पे हम तैयार हो रहे होंगे बाहर जाने के लिए, राइट? सो someone can say like this. Someone can also say that we will get ready at 1 p.m. tomorrow to go out. अभी हमको अच्छे से पता है कि 1 p.m. पे हम तैयार होंगे बाहर जाने के लिए. सो you can say that way also. हम ऐसे भी बोल सकते हैं that at 1 p.m. tomorrow we will get ready to go out. Right, so that is also making sense. So sense, it is all about that क्या sense आप निकालना चाहते हैं and उसको किस तरह से आप यूज करना चाहते हैं. Okay. Alright, so कुछ examples negatives के ले लेते हैं. Negatives easy हैं. For example, when she arrives, we are, because we are practicing future continuous, so यहाँ पे future continuous use करेंगे. When she arrives, I won't be reading. Now, see, when you make this sentence, what is the sense coming out from this sentence? Okay, क्या sense निकल रहा है if you are reading or if you are using this sentence? When she arrives. Okay, now remember कि ये जो when she arrives है, ये हम simple situation में future का ही sense निकल रहा है. इस part से भी future का ही sense निकल रहा है, लेकिन हम when and if के साथ will को use नहीं करते, राइट? लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे फ्यूचर सेंटेंस आ रहा है एक पार्ट में, वहाँ एक पार्ट में व्हेन और इफ यूज हो रहा है, तो वो सेंस फ्यूचर का ही देगा. ओके, जरूरी नहीं है हम उसमें विल लगा के ही सेंस निकालें. सो ऐसा नहीं लिखना है हमको व्हेन विल शी अराइव. ओके, और व्हेन शी विल अराइव. ओके, व्हेन शी विल अराइव आई वोंट बी रीडिंग. ओके, सो व्हेन एंड इफ के साथ हम विदाउट विल यूज किए, विल बिना यूज किए भी फ्यूचर का सेंस निकालते हैं. कैसे सेंस निकलेगा? सेंटेंस को देखिए. व्हेन शी अराइव्स आई वोंट बी रीडिंग. जब वो आएंगी,
मैं पढ़ नहीं रहा हूँगा। आई वॉन्ट बी रीडिंग वेन शी अराइव्स, ये पार्ट हम पहले भी रख सकते हैं। आई वॉन्ट बी रीडिंग वेन शी अराइव्स, जब वो आएंगी आई विल नॉट बी रीडिंग, पढ़ नहीं रहा हूँगा। आई विल बी प्लेइंग, तो खेल रहा हूँगा। आई विल बी वॉचिंग टीवी, में तो टीवी देख रहा हूँ। और आई विल बी गोइंग आउट विथ माई फ्रेंड्स, जब वो आएंगी, राइट, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ। Okay, so something you want to talk about that you will be doing continuously in future, right? So again, ये जो examples हैं, इनसे हम ये समझ रहे हैं कि कैसे हम इन situations में इन examples को use कर सकते हैं। Okay, future continuous के, because again future continuous normally use नहीं होते हैं, as I am saying, तो ये आपको you have to make efforts in terms of using them. Okay, थोड़ा सा कोशिश करके इनको use करना है, right? एंड हर स्ट्रक्चर को इसलिए यूज करना है ताकि वो स्ट्रक्चर फ्रेश रहे। कोई भी स्ट्रक्चर अगर यूज नहीं होगा, सो इट सिंपली मीन्स दैट बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग दैम अलॉट, सो वो फ्रेश नहीं रहेगा। सो देयर कुड बी अ कंफ्यूजन बिकॉज सिंपली you are not using that structure. So that's what you have to keep in head, that all the structures you are using on continuous basis, so that you are super comfortable with all those structures. Okay, one more example. When she arrives, okay, same sentence, and it is very simple. What will you say? You won't be sleeping. एंड नाउ सी द सेंस, क्या सेंस निकल रहा है? व्हेन शी अराइव्स, जब वो आएंगी, लेट्स से शी मदर की बात हो रही है। ओके, सो व्हेन मदर अराइव्स, व्हेन शी अराइव्स, यू वोंट बी स्लीपिंग, आप सो नहीं रहे होंगे, राइट? व्हेन मदर अराइव्स, आई वोंट बी स्लीपिंग, जब मैं मदर आएंगी तो मैं सो नहीं रहा होगा, राइट? I will be doing something, कुछ कर रहा हूँ. So you can say anything. Okay. Here the point is that you are understanding how to use these kind of different sentences. Okay, related to future continuous situation. All right. When she arrives, we won't be working. अभी तो आपको समझ में आ गया होगा ये सेंटेंसेस कैसे काम कर रहे हैं एंड किस तरह का सेंस निकल रहा है। देखिए, इंपॉर्टेंट अगेन ये है कि व्हाट आर यू थिंकिंग। ओके, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सेंटेंस यूज करना चाहते हैं, राइट? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से एनी स्ट्रक्चर यू हैव टू यूज। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, एंड सिचुएशन से अगर वो स्ट्रक्चर जो भी आप यूज कर रहे हैं दैट इज गिविंग मीनिंगफुल मीनिंग, राइट, तो करेक्ट है, राइट? अगर मीनिंगफुल नहीं है, सो देन इट मीन्स यू हैव टू मेक श्योर दैट यू यूज इट करेक्टली so that the meaning comes out properly. Okay? चलिए, when she arrives, I won't be studying. Okay, so all the examples you have to see कि कैसे आप उनको यूज कर सकते हैं। Okay, so सारे examples ऐसे यूज करना है। Now I will not write the answer here, you know how to do it, so जल्दी से कर लेंगे। When she arrives, important ये है what is the sense coming out। Okay, क्या sense निकल रहा है, क्या sense निकाल रहा है? When she arrives, this part। Okay, so complete this part। Okay, when we make interrogative sentences of future continuous, again super simple, बस यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि will से question start होगा because it is a yes no question. Okay, so yes no questions हैं ये सारे, and will and be के बीच में subject, so you have to use subject in between will and be. So this is the structure you will follow to make a question of future continuous. What will be? Okay, यहाँ पे अभी अब WH word use नहीं कर रहे हैं, तो yes no question use करते हैं। Okay, will you be playing cricket tomorrow at this time? Simple question. Will you be playing cricket tomorrow at this time? Will you be studying tomorrow at this time? Question is using. Okay, so अब देखिए अगेन ये क्वेश्चन हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, विल यू स्टडी टुमारो एट दिस टाइम, क्या आप इस टाइम पे पढ़ेंगे? एंड देन वी हैव अ डिफरेंट वर्जन, विल यू बी स्टडिंग, क्या आप पढ़ रहे होंगे? ओके, सो पढ़ेंगे एंड पढ़ रहे होंगे, देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ द पार्ट्स, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है, एंड वो सेंस समझ के हमको यूज करना है कि कहाँ पे क्या यूज करना है।
Okay, one sentence is talking about क्या वो continuous process चल रहा होगा, okay, action चल रहा हो, okay, at this time, इस time पे वो action चल रहा हो. एक एक वर्जन ये है कि क्या आप उस टाइम पे वो काम करेंगे. Okay, so this is the difference between the two parts, and you have to make sure that you understand the difference and you use this structure as per the situation where you have to give this sort of sense. Okay, will you be playing cricket in the evening tomorrow? Okay, will you be playing cricket in the evening tomorrow? I think yes, I will be playing cricket in the tomorrow. In the evening tomorrow. No, I won't be playing cricket in the evening tomorrow. I will be studying. Okay. So whenever you see questions, you have chance to give both answers. Yes, no answers. दोनों answers दीजिए. Yes answer भी दीजिए. No answer भी दीजिए. And that way you have to practice questions. Okay. Will she be visiting her grandparents next weekend? Okay. So again, you can also ask this question like this. Will she visit her grandparents next week? Will she visit her grandparents next week? Or will she be doing something like this? Will she be visiting her grandparents next week? So again, it depends on you as a speaker, how you want to use it. Okay. But for that, it's important that structures are clear in your head, situations are clear in your head, and you know what is the sense coming out when you use them. Okay. That is important. All right. So then we have WH word questions. And with WH word questions, same sort of sense will come out. Again, it depends to understand the situation and then to make questions accordingly. So for example, someone wants to know at this time, what will you be doing continuously? Okay, what will you be doing at this time tomorrow? What will you be doing at this time tomorrow? At this time tomorrow, I think I will be studying. I will be eating lunch. I will be talking to my friends. I will be coming back from school. Okay. I will be going to the market. Okay. So again, understand that how the question is coming, and as per the question, you can give the answer. What will you do at this time tomorrow? What will you do at this time tomorrow? हो सकता है किसी ने question आपसे ऐसे पूछ लिया. What will you do at this time tomorrow? At this time tomorrow, I think I will go out, or I will study, or I will take lunch. I will eat lunch. All right. So जैसा question है वैसे उसी के according you will use the structure and you will give the answer. Okay. So as a speaker ये आपके ऊपर depend करता है. As a listener, जैसे आप listener में थोड़ा सा चीजें easy हो जाती हैं, right? Listener में you will listen to the question and as per the question you will answer. Okay, but when you have to ask, right, so there you have to see कि आप क्या सोच के question पूछ रहे हैं, right? What do you want to know? आप क्या, आपको question जो पूछा जा रहा है आप क्या जानना चाहते हैं, right? So for that you have to use question properly, proper structure, and sense should be clear in your head. Okay, कि क्या sense इसका होना चाहिए, क्या सोच के मैं ये sentence या question use कर रहा हूँ. Okay, where will they be waiting for you? Next question, for example, where will they be waiting for you? Okay, कहाँ पे वो आपका इंतजार कर रहे हो, राइट? सो कहाँ पे इंतजार कर रहे होंगे, आपने कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया है कि आप मेरा इंतजार वहां पे करेंगे. अब किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपके फ्रेंड्स कहाँ पे इंतजार कर रहे होंगे, राइट? तो आप बोलिए कि यस, माय फ्रेंड्स विल बी वेटिंग फॉर मी एट द बस स्टॉप. वो मेरा बस स्टॉप पे वेट कर रहे होंगे. माय फ्रेंड्स will be waiting for me at in a restaurant, okay, or at restaurant, right? So it depends कि कहाँ पे हम कैसे यूज करना चाहते हैं, and simply you will use as per the situation. Okay, so future continuous यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस. अगेन वैसे तो सारे ही स्ट्रक्चर्स के लिए प्रैक्टिस है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस नॉर्मली इस तरह से हम यूज नहीं करते, राइट? तो वी टेक द हेल्प ऑफ सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर यूज करके ही बात को बोला जा सकता है, राइट? लेकिन ऐसी भी हैबिट डालिए दैट यू आर यूजिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस, एंड कंटिन्यूअस यूज करने के लिए आप देख रहे हैं किस तरह के सेंसेस आ रहे हैं, किस तरह की सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, राइट? ऐसी भी सिचुएशन है जहाँ पे आप गेस करते हैं कि फादर ऐसा कर रहे होंगे,
right? So use all these situations, these examples to make some sentences. And when you make all these sentences, make sure that you are using different structures all the time. Okay, and there you understand in a better way. ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के फ्यूचर कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर्स कैसे यूज हो रहे हैं, एग्जांपल्स देख लिए हैं कि किस तरह के एग्जांपल्स में हम यूज करते हैं, क्या सेंस निकलता है, क्या सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये यूज हो सकते हैं, राइट? नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस देम। ओके, सो जैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने प्रैक्टिस करते रहेंगे वो धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स जो है उसमें आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा। बिकॉज सिंपल है, जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी, उतने ज़्यादा डिफरेंट सेंटेंसेस भी आपके एग्जाम्पल्स के तौर पे आते रहेंगे कि हाँ इस सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल when you think, when you make your own sentences. And that's why it's important to make your own sentences, think about your own examples, and get into some conversations, right, with your friends or somebody else, so that you get the idea what kind of sentences are asked, or you make questions and you give answers. Okay, that way. चलिए, ऑल राइट, सो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन होगा, सो देन you have comment section, you can ask your question, or you can talk about your doubt in with the help in that comment section, and you can share some your own examples, right? That is also wonderful. If you have some examples, you can think of some examples, then share those example in the comment section. Okay, all right. चलिए, कुछ एग्जाम्पल्स और हैं एंड वो कंप्लीट करें. Someone wants to ask questions. Okay, when the boss comes. mm, all right, how will you complete these questions? Okay, ये आपको खुद करना है. ओके, सी कि यहाँ पे आप ये क्वेश्चंस कैसे कंप्लीट करेंगे, बिकॉज सिंपली यू आर सेइंग देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, सो दैट इज अ क्लियर हिंट फॉर यू that you have to make a question here. Now you have to see that which question will be meaningful here. What will you ask? How will you ask? That is the point. Okay, and when you ask the question, then also give the answer. Okay, these questions also. So ये जितने भी questions के examples हैं, you will do by yourself. Okay. All the questions are related to what? Related to future continuous. So you will only think about future continuous situation and you will complete these questions. Uh, Make sure when you complete these questions, you also try to give the answers of these questions. Okay? And finally, you will also complete these 8 different sentences. Okay? ये भी कर लेंगे. And when you complete the question, give the answer. Okay, so these are some examples. Again, some examples. So just to check your understanding के sense के according हमको कितना समझ में आ गया है, हम sentences कैसे use कर रहे हैं. तो जितने examples आप देखेंगे, right, like these examples, उतना ज़्यादा understanding clear होगी, उतना ज़्यादा clarity आएगी किस तरह से हमको use करना है. Okay, so first 4 questions, first 4 sentences में you have to complete the questions, and जो next 4 हैं उसमें you have to make negative sentences जैसे अभी हमने try किए. Okay, so ये आप जल्दी से करके and understanding clear कर लेंगे. Okay, and if there is any question, any confusion, then you have to ask that. Okay, चलिए, and नेक्स्ट क्लास में जल्दी से हम इसको एक बार रिव्यू कर लेंगे कैसे हमको करना था. एग्जाम्पल्स तो आप लोग, आई एम श्योर कि आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, राइट? वहां पे इम्पोर्टेंट ये है कि सेंस, व्हाट इज द सेंस कमिंग आउट, राइट, व्हेन यू आर यूजिंग, व्हेन यू आर आस्किंग दीज क्वेश्चन, सो व्हेन यू आर कंप्लीटिंग दीज स्टेटमेंट्स, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट.
All right. चलिए. So this you will do, and again with some different examples, you will keep on practicing, you will keep on exercising, keep on making sentences. Okay, so practice the exercise with the help of different exercise. Okay, you have to do, keep on doing all these things. Okay, जाने से पहले आप लोगों को एक और एक्सरसाइज आई विल गिव. ओके, यहाँ पे एक सिंपल सी एक्सरसाइज है दैट आई वांट टू शेयर विथ यू, एंड इस एक्सरसाइज को भी आप कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सो यहाँ पे दिस इज द पैराग्राफ. ओके, सो रीड दिस पैराग्राफ एंड complete this paragraph. Okay, all right. You know the situation is there. लेकिन अगर सिचुएशन हम नहीं भी हमको दी जाए और सिर्फ हमारे पास ये पैराग्राफ, सेंटेंसेस पढ़ के आपको समझ में आ जाना है कि क्या सिचुएशन चल रही है, किस बारे में बात हो रही है, एंड हाउ विल यू कंप्लीट. ओके, एंड कैसे हमको कंप्लीट करना है, कैसे हम कंप्लीट करेंगे, सिर्फ सेंटेंसेस पढ़ के ही समझ में आ जाना है. ओके, सिचुएशन तो है ही वैसे भी, लेकिन ओके, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. ऑलराइट, चलिए. So you will do all these exercises, and apart from these exercises, जितनी भी exercises हैं उनमें से भी बीच बीच में से कुछ sentences करते रहिए. Right, जितना ज़्यादा sentences करते रहेंगे बीच बीच में से, it means you are doing different things. Okay, different structures on daily basis, and this is something very important. Right, so you have to take care of all these things, and you have to make sure that you are पुटिंग एफर्ट्स. राइट, आप लोगों को अपने एग्जाम्स के लिए भी अच्छे से पढ़ाई करनी है. ओके, वो भी इम्पोर्टेंट है, एंड इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल के मेक श्योर दैट यू आर making sentences, you are right, you are doing something in terms of reviewing the structures also, or talking about something. Okay. So from here, this much today, and we'll continue in the next class. And नेक्स्ट क्लास के लिए आपने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं वो आप कर लेंगे. राइट, वी विल रिव्यू दीज एग्जाम्पल्स, एंड फ्रॉम देयर वी विल मूव फॉरवर्ड. ओके, so this much for today, and we are going to continue in the next class. All right, everyone, bye bye, take care.